हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट सीरीज एंड आज हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। क्यों हमें वेरिएबल्स में कांस्टेंट यूज करना चाहिए, क्या है लेट एंड क्या है वेयर। लेट्स स्टार्ट। आई विल मेक इट लाइक advanced variable dot js like this. Now let's take an example. Let me first give the comments. Difference between like this where let const. So earlier versions of JavaScript may we use where to make a variable, and then for example result is equal to us like this. But if we use it in a function like function get result, and now if I use result is equal to fail, and then I console.log result like this. And also let me just change here advanced variable like this. And now let me just copy the path, fire up my browser, and over here if I paste this and inspect, log out, I get pass. That's because I haven't called this function. Now let's call this function. हम इस function को यहाँ पे call करेंगे uses using parenthesis, and when I hit save, and now when I try to reload, I get fail. That means this function has changed the value of result. Now let's use let, in my case let instead of where, and now reload, and now check fail. So this also updates the value. But if we are having the variable here, let's save this, and now we try to print the variable. Okay, now let's see what we get. We get fail. So we can update the values like this. Okay, we can update the value like this using where and let. But now if I change its value to const like this, const, and now if I reload, I get assignment to a constant variable, this error, because constant इस वैल्यू को परमानेंटली स्टोर कर लेता है, एंड ये वैल्यू कभी भी अब अपडेट नहीं हो सकती है. So if you want to restrict some value in a variable, so ये वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज हो सकता है, and then you cannot update that variable. So in the later new versions of JavaScript, we use let, but in the older versions, we used where. But when you want to make some result permanent into a variable, you use const, because you know this is going to never change. But now see this, const array is equal to 1, 2, and 2, 3, and 4 like this. Let's comment this entire thing. And now if I console.log array reload, I get the array. But
This is a constant, okay? And if I push, let's say, hello in this, and I reload, wait, let me first push this and then print the array, save, reload, I get 4 elements. बट ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ये एक कांस्टेंट था एंड वी आर एबल टू पुश दिस, बिकॉज हमने ये एक एरे बनाया है, ये एरे एक कांस्टेंट है बट उसके अंदर के एलिमेंट्स वी कैन रिमूव और पुश. हम इसके अंदर नया एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बट ये जो स्टेट है, ये जो डेटा टाइप है, ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. And same it is with the case of objects, like const object1 is equal to name, let's say name Sid. And if I now print object1 and I hit reload, I get the name. But if I now do something like this, just comment this, and if I try to do something like this, object1 dot gender is equal to male, and then I try to console log this object, hit reload, I get the value. Because in this also ये state, ये data type जो कि एक object है, ये constant है, but अंदर की properties we can add or remove, but the properties we cannot update. For example, if I try to do object1 dot name is equal to Raj, hit save and reload. See, this also gets updated in an object. That means, that means objects and arrays can have different values and also can be removed, can be added, can be updated. But ये क्या चीज रहेगा कि इसका जो डेटा टाइप है लाइक एरे और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चीज हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 को असाइन करूं सिड लाइक दिस एंड इफ आई रीलोड, I get assignment to the constant variable, the same error. And also, if we rush to the internet, I would like to show you one more thing, where versus let in JavaScript. Some interesting facts about where versus let. Let is block scope and where is function scope. Let do not allow you to redeclare variables. Where allow you to redeclare variables. What is all this? Let me tell you. If we use let name is equal to or let phone number is equal to 9876543221 like this, something like this. So let does not allow you to redeclare variables. And now if I want to use it like this, let this. So now you can see there is an error. Can no redeclare block scope variable phone number. हम इसको वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम इसको लेट के साथ में ऐसे चेंज नहीं कर सकते, बट हम इसका वैल्यू अपडेट कर सकते हैं. वी कैन स्टिल अपडेट द वैल्यू, समथिंग लाइक दिस. बट अगर हम वेर का देखें, वेर फोन नंबर, सेम एग्जांपल ले हम, वेर फोन नंबर 2 इज इक्वल टू गोइंग टू पुट द सेम वैल्यू. बट अगर मैं अगेन इस चीज को यहाँ पे यूज करूं, I can use it again. So ये है एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपका वैल्यूज परमानेंट बनाने के लिए, बट इट डज नॉट वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज वो सिर्फ एक डेटा टाइप को फिक्स कर लेता है कांस्टेंट में, बट हम एरे और ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू अंदर चेंज, मैनिपुलेट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं. बट in the case of strings and numbers, objects, strings and numbers,
कांस्टेंट कैन नॉट गेट अपडेटेड, वो उसकी स्टेट हमेशा सेव रहेगी। बट लेट एंड कॉन्स्ट, लेट एंड वेयर में क्या डिफरेंस है? लेट को आपने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, आप उसको वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो कैसे भी स्कोप में। बट वेयर के साथ में आपने जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद इनिशियलाइज किया है, आप उस सेम वेरिएबल को वापस से डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। So that's it for the difference for this video in which I told you the difference between var, let and const. I will see you in the next video. Please, आपने बहुत प्यार दिया है मेरे चैनल को. You have subscribed, you have made subscribers a lot, बट आई नीड कि आप जो है सब्सक्राइबर्स थोड़े से और बढ़वाएं, जिससे कि चैनल को और सपोर्ट मिले। एंड चैनल जितना ज़्यादा लोगों के सामने आएगा, उतना ज़्यादा जितने भी अभी तक के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जिनको अच्छा जॉब नहीं मिल पाया है, दे कैन लर्न फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजीज एंड गेट द इंटरव्यू क्रैक्ड, एंड उनको एमएनसीज में जॉब भी मिल सकता है। बिकॉज ये कुछ की और कॉन्सेप्ट्स है हर टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ, जो कि आपको जॉब लेने के लिए आसानी हो सकती है। एंड इंटरव्यूज में यही सब चीजें आपसे पूछी जाती है, लाइक सब इसमें, जिसमें से कि एक क्वेश्चन था कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।